Good morning, Devasis. ତାର ଭଏସ ଆସୁଛି? ହଁ ତମର ଭଏସ ଆସୁଛି, ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି? ତମର ଭଏସ ଆସୁଛି, ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି କି? ମୋ ଅଡିଓ ଆସୁଛି? ଦେବାଶିଷ ଭଏସ ଆସିଲା? ଆସୁନି? ମୋ ଭଏସ ଆସିଲା ଦେବାଶିଷ? ଦେବାଶିଷ ଅଡିଓ ଆସୁଛି? କାଟିକି ପୁଣି ଥରେ କର। ଦେବାଶିଷ
हेलो सर गुड मॉर्निंग सर शुभुची मॉर्निंग मॉर्निंग आस्ती ऑडियो आस्ती एबे हाँ हाँ सर आस्ते हुए ओके देखो यूजिंग ऑपरेटर एंड डेवलपिंग रीडेबल कोड राइट आप पूर्व हम सर जानथिले गोटे मिनट हां सर 104 पेज से देखिए 104 नेस्टेड ब्लॉक पर पढैथिल डिटरमिनिंग वेरिएबल स्कोप सर एटा पढ़े थिले हां सर आदर जो नेस्टेड ब्लॉक पढै नथि एग्जीक्यूट सर एगुडा एग्जीक्यूट यूज कली कि सर डीबीएम आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन देले सेटा को आसुन एरर देखुची कोनटा तळ कोनटा जो देखौची एग्जांपल ता एरर आसी ता दरे एटा रे एइतरे सपोज मु सर डीबीएम आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एरर देउ सेटा केतर कला अच्छा देखि दवा सेटा हला देखि दवा से सर ठीक है हम प्रैक्टिकल करबा देखि दवा सेटा सर ठीक है using operator and developing readable code operator in plsql logical arithmetic concatenation parenthesis to control order of parenthesis same as sql right ए सब जिंस तमरो sql रे जेमति हमें यूज करूथले लॉजिकल ऑपरेटर जेमति एंड और नॉट जेमति यूज करूथले सेमति हमें plsql यूज करे अरिथमेटिक ऑपरेटर भी सेम जिंस कंकाटिनेशन भी सेम जिंस कंकाटिनेशन जेमति करथले प्लस सिंबल दे कि हमें दीटा टेक्स्ट को हमें जॉइन करथले पैरेंथेसिस कंट्रोलर भी सेम जिंस तो एसक्यूएल हमें जेमति ब्लॉक हमें जेमति यूज करथले जेमति ऑपरेटर यूज करथले एठी भी सेम जिंस तमे यूज करते खाली एति कि जे पीएलएसक्यूएल तमरो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर तमरो यूज हुए दीटा स्टार मार्क यूज हुए एटा कोन हमें सब्सिक्वेंट चैप्टर रे हमें जानिबा राइट operator in PLSQL, the operation in an expression are performed in a particular order depending on their procedure priority. The following table shows the default order of operation from high priority to low priority, right? तो प्रथम रोची तमरो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर देन तमरो आइडेंटिटी नेगेशन आइडेंटिटी माने प्लस नेगेशन माने माइनस राइट देन तमरो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तापर तमरो एडिशन सब्सट्रैक्शन कंकैटिनेशन तो एठी पीएलएसक्यूएल कंकैटिनेशन रे केमती हुए दीटा पाइप सिंबल जोटा कि और आमे को राइट देन तमरो कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल टू राइट तो एगुडा सब मोर कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट एंड और होची मोर लॉजिकल ऑपरेटर राइट गोटे सब्सिक्वेंट क्वेरी रे जदि आमे तीनटा ऑपरेटर तीनटा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करिथिबा एंड और नॉट जदि यूज करथिबा तो सीक्वेंशियली जदि एग्जीक्यूट हबो प्रथमे नॉट एग्जीक्यूट हबो तापरे एंड एग्जीक्यूट हबो तापरे और एग्जीक्यूट हबो एटा होची प्रोटोकॉल नॉट एंड और तमे जति डिक्लेयर करो प्रथमे और डिक्लेयर करो तापरे एंड डिक्लेयर करो तापरे तमे नॉट डिक्लेयर करो बट सीक्वेंशियली तमर प्रथमे नॉट एग्जीक्यूट हबो देन तमर एंड एग्जीक्यूट हबो देन तमर और एग्जीक्यूट हबो बुझला increment the counter for loop माने कोन जे collection of statement to perform a more than once right गोटे स्टेटमेंट को किमा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को जदि मते गोटे रु अधिक थर जदि एग्जीक्यूट करबा पई जदि रिक्वायर्ड होउची ताले सेही पर्टिकुलर कांसेप्ट को कुआ जे मोर लूप राइट तो एठी लूप काउंट केते मोर काउंट हबो माने धरो तमे गोटे ग्राउंड रे तुमको 1500 मीटर्स तुमको रनिंग करिया पे कुहा गला तो 1500 मीटर्स मींस गोटे ग्राउंड रो तीनटा राउंड राइट तमे गोटे राउंड बुलिलो दीटा राउंड बुललो तीनटा राउंड बुललो ताको काउंट करिया पे तुमको गोटे वेरिएबल दरकार गोटे इंक्रीमेंट दरकार जोटा कि होची तमरो लूप काउंट +1 केते थरो तमरो एग्जीक्यूशन हला सेटा से काउंट करी राइट देन सेट वैल्यू बुलियन फ्लैग आइदर ट्रू और फॉल्स माने तमे कंडीशन दबो राइट salary in between 50,000 and 1,50,000 जदि आ भीतर जदि अछि ट्रू जदि होउची ताले तमर से स्टेटमेंट गुडा को एग्जीक्यूट करबो तो हमेशा मन रखिबो लूप रे कंडीशन जे जाइन तमर ट्रू होउथबो सेते जाइन तमर स्टेटमेंट गुडा एग्जीक्यूट होथो वंस थरे कंडीशन ता फॉल्स हैला पर तम स्टेटमेंट रो से तम फ्लो ऑफ कंट्रोल ता बाहर को आसीबो तम ब्लॉक रू बाहर को आसी तम बॉडी रू बाहर को आसी बुझला तो एटा हो हमर बुलियन एक्सप्रेशन जोटा कि तमरो ट्रू और फॉल्स को चेक करियो जदि ट्रू थिबो ताले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करियो जदि फॉल्स थिबो ताले एग्जिट हिजिबो बुझला देन वैलिडेट whether an employee number contains a value then तमरो एक्सप्रेशन तमे दबो employee is not null right
तो एटा होची मोर स्टेटमेंट तो प्रथमे मोर कंडीशन रहइबो देन तमरो स्टेटमेंट रहइबो देन तमरो स्टेटमेंट जेते थोर एग्जीक्यूट हबो सेते थोर तमरो इंक्रीमेंट तमरो लूप रो काउंटेशन ता तमरो इंक्रीमेंट बुझला operator in plsql when you are working with nulls you can avoid some common mistake by keeping in mind the following rule comparison involving null always yield null right null कह के लिखा हुए ताकू then applying the logical operator not to a null yield null in conditional control statement if the condition yield null its associated sequence of statement is not executed make code maintenance easier by documenting code with comment developing a case convention for the code developing naming convention for identify and other object enhancing readable by indenting right programming guideline the following program guidelines shows in the slide to procedure clear code and reduce maintenance when developing a plsql block code convention the following table provides a guideline for writing code in suppose or lowercase character to help uh, 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 distinguish the keyword from the named object, right? Category, case sensitive convention, and example, right? The category means SQL statement in uppercase मोर लिखा हुए सब तो query मोर uppercase लिखा हुए and for example select and insert right जेमती तमरो SQL statement रो query जेमिति तमरो लिखा हुए select and insert तो सब मोर uppercase लिखा हुए same as the plsql block रे plsql block रे मोर कोन थाए declare begin if थाए right तो declare मोर declaration variable declaration करिवो begin मोर body टा को begin and end करिवो and if मोर condition टा निया जाए तो सबु मोर पार्ट मोर अपर केस रहइबो डाटा टाइप भी मोर अपर केस रहइबो आइडेंटिफाई एंड पैरामीटर जो पैरामीटर माने वेरिएबल ना हो किबा तम पैरामीटर्स भीतर पैरेंथेसिस ब्रैकेट भीतर जहां पास करू सेटा सब लोअर केस से तम रखि परिबो डाटाबेस टेबल तमरो लोअर केस रहि परिबो राइट डाटाबेस ना आ टेबल ना तम लोअर केस रखि परिबो डाटाबेस कॉलम्स लोअर केस एंड सिंगुलर राइट सिंगुलर माने कोन गोटिए ना रहइबो जेमति एम्प्लॉय आईडी नॉर्मली हम जत लिखिबा कोन एम्प्लॉय स्पेस आईडी तो जत बट जत कॉलम क्रिएट करिवो टेबल भीतर सेते स्पेस अलाउ करिवनी अंडरस्कोर रहइबो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी सिंगुलर नारे रहइबो बुझला for clarity indent each level of code begin if x equal to 0 then y equal to 1 1 टा मोर आसान हैला कोठी y रे and if right तो एठी मोर डिक्लेयर कला गोटे डिक्लेयर डिपार्टमेंट नंबर तार डाटा टाइप मोर मेंशन कला लोकेशन आईडी मोर मेंशन कला बिगिन सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी लोकेशन आईडी इनटू डिपार्टमेंट नंबर राइट लोकेशन आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स राइट डिपार्टमेंट्स टेबल रु मोर डिपार्टमेंट आईडी एंड लोकेशन आईडी कॉलम रु डाटा मोर रिट्रीव करिवो सेटा कोठी स्टोर करिवो भारे डिपार्टमेंट आईडी टा रिट्रीव करिकि मोर डिपार्टमेंट नंबर वेरिएबल रे स्टोर करिवो एंड मोर लोकेशन आईडी कॉलम रो डाटा टा को रिट्रीव करी मोर लोकेशन आईडी वेरिएबल भीतर मोर स्टोर करी राइट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स डिपार्टमेंट नेम जो जहार सेल्स हो तार डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट आईडी सॉरी लोकेशन आईडी तमरो रिट्रीव करिकि तार निज निज वेरिएबल भीतर डाटा टा को से स्टोर करी क्लियर indenting code for clarity and enhance readability indent each level of code to show structure you can divide lines by using carriage returns and you can indent line by using space and tabs compare the following if statement for readability if x is greater than y then maximum gote variable declare kala then x ro value ta moro maximum re moro store hobo or else मोर y रो वैल्यू टा मोर मैक्सिमम रे स्टोर हो राइट एंड इफ जो फर्स्ट स्टेटमेंट टा जो अछि मोर एठी एटा राइट x इक्वल टू 0 मु कंपेयर करबी एठी इफ x इज ग्रेटर देन टू y if yes then
इमीडिएट ब्लॉक रे जोटा लिखा हबो इमीडिएट स्टेटमेंट जोटा लिखा हबो सेटा होची ट्रू वाला पार्ट राइट ए कंडीशन ट्रू हेले मोर एटा एग्जीक्यूट हो बुझला जदि ए कंडीशन फॉल्स हुए ताले एल्स ब्लॉक भितरे जहा लिखिथिबी सेटा मोर एग्जीक्यूट हो बुझला कंडीशन रियल लाइफ रे भी कंडीशन दीटा पार्ट थाए तमे जो डिसीजन नोचो तार दीटा पार्ट थाए से डिसीजन टा फुलफिल हेले कोनटा हबो डिसीजन टा जदि फुलफिल न हुए ताले कोनटा राइट डिसीजन टा जोटा फुलफिल हुए ताले तार इमीडिएट ब्लॉक रे जोटा देन पर जोटा लिखा हो एटा होची ट्रू ट्रू वाला पार्ट एल्स ब्लॉक रे जोटा लिखा हो एल्स पर जोटा लिखा हो सेटा होची फॉल्स वाला पार्ट बुझला सेटा एठी से एक्सप्रेशन टा देइची केमते लिखा जिवो इफ x इज ग्रेटर देन टू y देन ट्रू रहिला और एल्स जदि एटे कंडीशन हमर फेल्स फॉल्स हैला ताले एल्स पर जोटा लिखा हबो सेटा होची मोर फॉल्स वाला पार्ट देन तापरे एंड इफ राइट इफ टा मोर एंड बुझला cover the following topics reviewing scope and nesting rule writing testing plsql block interacting with oracle database server sql statement in plsql programs right ebe asla plsql program ame kemti kariba objective after completing this lesson you should be able to do the following determine the sql statement that can be directly included in a plsql executable block manipulate data with dml statement in plsql block then use transaction control statement in plsql make use of the into clause to hold the values returned by sql statement differentiate between implicit cursor and explicit cursor implicit cursor ta kona explicit cursor ta kona se bishay re amara ei session e discussion karaichi and use sql cursor attribute right retrieving data with plsql plsql bhitere data achi taku kende retrieve kariba right SQL statement in plsql retrieve a row from the database by using the select command make changes to row in the database by using the dml command dml means data manipulation language right control a transaction with commit rollback or save point command right in plsql block you use SQL statement to retrieve the and modify data from the database table plsql support the data manipulation language and transaction control command you can use dml command to modify the data in a database table however remember the following points while using the dml statement and transaction control command in plsql block right the end keyword signals the end of plsql block not the end of a transaction right end statement हम जेतले यूज करछे end keyword जेतले यूज करछे सेटा plsql रो तमरो statement टाको end करिया पे हमरो end keyword टा दिया जाय ना कि पूरा transaction टाको end कर दबो सेठी बुझला just as a block can span multiple transaction a transaction can span multiple block plsql does not directly support data definition language ddl statements such as create table, alter table, or drop table. plsql support yearly binding, which cannot happen if application have to create database object at runtime by accessing values. DDL statement cannot be directly executed. These statements are dynamically SQL statement. Dynamic SQL statements are built in a character string at runtime and can contain placeholder for parameters. Therefore, you can use dynamic SQL to execute your DDL statement in plsql. The details of working with dynamic SQL is covered in the course title Oracle Database 11G developed in plsql program units, right? तो जेतेबे तमरो DDL statement यूज करजो सेतरे तमरो create table, alter table, drop table, right? And database तमरो ए सब जिंसो जेते सब create वाला statement सब तमरो DDL statement ए जाय and DML statement ए तमरो data manipulation data already तम पाखरे अछि then ता ऊपर जदी manipulate मते करिवार अछि ता ऊपर मते data manipulation language मोर DML statement हमर यूज करा जाय like तमरो select हो तमरो declare हो right
जो थे कि मु डाटा ऊपर मैनिपुलेशन कर पारि मो पाखे डाटा अछि मु डाटा को मो रिक्वायरमेंट अनुसार मु जतरे रिट्रीव करिवि सेताबेले मते डीएमएल स्टेटमेंट मते एग्जीक्यूट करिया पे पड़ियो राइट In plsql does not directly support the data control language statements such as grant and revoke grant माने कोन मते allow करबा को पड़े राइट मते allow करबा को पड़े जे bunch of statement को execute करी तो perform a specific task मोर रिक्वायरमेंट अनुसार जदी मते bunch of statement को जदी मते retrieve माने execute करिया पे पड़े ताले मु ताकू सेथरे grant statement मते यूज करिया को पड़े रोल बैक जदि मते जदि किछि एरर थ्रो करूची तते मते सेटा रोल बैक करू जो एररटा जो लाइन रे मोर आछि सेटा मते रोल बैक करू राइट सेम जेमति तम एसक्यूएल स्टेटमेंट जेमति यूज करतलो पीएलएसक्यूएल स्टेटमेंट भी डिटो सेम तमे यूज करियो बट एटा डायरेक्टली यूज कर परिबो नाही पीएलएसक्यूएल ताकू हमको वाया वेरिएबल थ्रू रु हमें ताकू यूज करिया को पड़िबो बुझला retrieve data from the database with select statement जेमति तमरो थिला select list into variable name खाली एठी plsql डिफरेंस है एसक्यूएल हमें जेता टेबल जेता माने कॉलम गुडा को रिट्रीव करथले हमें डायरेक्टली लिखथले select column list from table name राइट तापर where रे हमें कंडीशन जहां भी हमें दोथले हम रिक्वायरमेंट अनुसार बट एठी कोन एठी हमको वेरिएबल डिक्लेयर करिया को पड़िबो कारण plsql कॉलम रो डाटा जेता रिट्रीव करबो ताको गोटे थर्ड पार्टी दरकार जो थे कि से वैल्यू गुडा को टेम्परेरी भाबे रे स्टोर करके तुमको शो कर परिबो ता पई मते वेरिएबल डिक्लेरेशन दरकार प्रथम राइट सो सेति पई जेताले हम सिलेक्ट कॉलम लिस्ट हम रहिला देन इनटू से वेरिएबल जो जो कॉलम तमे रिट्रीव करियो ता रिलेटेड वेरिएबल तमे डिक्लेयर करथिबो प्रथम रु से वेरिएबल ना तमे सेठी मेंशन करिवो देन टेबल नेम तमर रहिबो बुझला सर गोटे जिंस जदि आपनकर गोटे टेबल रे एम्प्लॉय टेबल अछि तादरे एम्प्लॉय नाम गुडा अछि मेंटेन होते सपोज 14 15 टा ना को गोटे इनटू करके आ गोटे वेरिएबल स्टोर करबे सेटा केम हो गोटे वेरिएबल रे सेठी पई बा तमरो वेयर कंडीशन दोचो एठी जदि दीटा आसेला गोटे वेरिएबल स्टोर करबे सेठी स्पेसिफिक डाटा को रिट्रीव करया पे तमे वेयर कंडीशन दोचो जदि तम मल्टीपल वैल्यू जदि वेरिएबल भीतर स्टोर करया पे चाहो परसेंटाइल टाइप तमर मन अछि परसेंटाइल टाइप एट्रिब्यूट सीटा को परसेंटाइल टाइप सर हला बुझला सर वेरिएबल डिक्लेरेबल यूज करबा पड़े सेटा हां परसेंटाइल टाइप हां सिलेक्ट काना एठी तुम जहां भी यूज करो जहां भी रिट्रीव करो तुम गोटे थर्ड पार्टी दरकार डायरेक्टली तुम कॉलम टा को रिट्रीव कर परिबो प्लेसफुल कारण ता ऊपर तुम काम करिवो राइट तापर तुम रिसर्च करिवो तापर तुम मॉडिफिकेशन करिवो सी कहूची डाटा जेतले तुम परमानेंटली स्टोर हैला सेटा डाटाबेस परमानेंटली स्टोर हैला एबे तुम रिक्वायरमेंट अनुसार तुम जे डाटा को मॉडिफिकेशन किछि करूछो ताला गोटे फ्रेम तुम थर्ड पार्टी गोटे फ्रेम आनो ता ऊपर तुम करो तुम रिपोर्ट जहां भी तुम जनरेट करबार अछि जनरेट करो बट ओरिजिनल टेबल ले जेंति मॉडिफिकेशन किछि न हो बुझला The select statement in PLSQL use the select statement to retrieve data from the database. Select list of columns, right? Can include SQL expression also. Then variable name, scalar variable that hold or retrieve value. And then record name, PLSQL record that hold or retrieved value. Table, specify the database table name. Condition is composed of columns name. Expression condition हमें जहाँ requirement अनुसार जहाँ condition हमें दबा सेटा हमें दबा. Right? Guideline for retrieving data in PLSQL terminate each SQL statement with semicolon. Right? इठी प्रत्येकटी SQL statement तमें semicolon दबा because of semicolon is used for the full stop. Right? जेमति तमें normal English रे full stop दोचो गोटे statement को end करिया पाए इठी every expression को end करिया पाए तुमको semicolon दरकार बुझला every value retrieved must be store in a variable by using the into clause. The where clause is optional and can be used to specify input variable, constant, literal, and PLSQL expression. However, when you use the into clause, you should fetch only one row using the where clause is required in such cases, right? जेतले हम स्पेसिफिक केसेस रे हमरो कंडीशन थ्रू रु हम जेतले कोन से डाटा को रिट्रीव करबा सेतले हमरो वेयर क्लॉज हमरो यूज करा जाय राइट स्पेसिफिक वैल्यू उडा जेतले हम रिट्रीव कर बुझला then select statement in PLSQL
specify the same number of variable in the into clause as the number of database columns in the select clause. Be sure that they correspond positionally and that their data type are compatible. Use group functions such as sum in a SQL statement because group function applied to group of rows in a clear. Select statement use करछि into clause required करछि variable declare कला v first name right then say retrieve कला select first name into variable name टा दला from employees where employee id equal to 200 right जहारो employee id 200 थिबो तार first name retrieve करके variable भीतर store करी बुझला then variable टा को display करतला तारा description टा सी देछि right. Into clause, the into clause is mandatory and occur between the select and form clause. It is used to specify the names of variable that hold the values that SQL returns from the select clause. You must specify one variable for each item selected, and the other variable must correspond with the item selected. Use the input clause to populate either plsql variable or host variable. Queries must return only one row. Select statement within a plsql block fall into the ANSI classification of embedded SQL for which the following rule applies. Queries must return only one row. कारण where clause जतले use करछि query मोर one ही row अछि कारण 200 employee id 200 right 200 जहार अछि कारण employee id केबे duplicate हे परिबनी right तो employee id जहार 200 अछि तार first name मते retrieve कला माने कोन गोटे value मोर retrieve करिवो right. plsql manage this error by raising standard expression which you can handle in the exception section of the block with no data found and too many rows expression. Include where condition the SQL statement so that statement returns a single row. You can learn about expression handling in the lesson of handling expression. Handling expression जतले chapter आसु सेतले तम जानि पर better तम केनती error टाको handle करबो बुझला. Then the edit is high date and salary specified employee first sorry v employee high date गोटे declare कला right सेठी मोर percentile type use कला right then आउ गोटे salary गोटे use कला percentile type use कला बुझला. then select high date salary into variable name कला from employee where employee id equal to 100 तापरे high date को show कला and salary को show कला तो एठी से देला high date तमरा date से देला and salary is 24,000 से देला बुझला. एटा हम काली स्टार्ट करियो तमे प्रोसेस तमे गोटे काम करो शुक्रवार की शनिवार देखि आसो सेंटर हला सेंटर का आसो मु एसो प्रैक्टिकल गुडा तुम देखि दे एटा काली आरंभ करियो कोना कले शुक्रवार की शनिवार आसो एटा काली आरंभ ए पेज रे हां एटा काली आरंभ करियो 124 पेज हला.